आज जो आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना का 3 साल होने जा रहा है आने वाला जो 23 में लॉन्च करके। तो इस पर अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है, जो आयुष्मान भारत का जो आरोग्य योजना को घर घर तक पहुँचाना चाहिए, आपका द्वार में पहुँचाना चाहिए। इसी कारण से आज यह हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं पखवाड़ा। तो इसमें जितना भी सोशो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस का मुताबिक 2011 सेंसस के मुताबिक इसमें उस अंदर में जो क्राइटेरिया में पहुंचने वाला को हाल सर भारत सरकार से एक गोल्डन जो ये से कार्ड से 5 लाख रुपया का जो मेडिकल हेल्थ में जो सेकेंडरी टर्शरी केयर ये में मदद करता है। तो उसमें जो अभी अरुणाचल प्रदेश में भी अराउंड 88,000 समथिंग है। तो उसमें भी अभी इतना तो अभी इन लोग चांस नहीं होता है, क्योंकि इन लोग उसको ठीक से नहीं जान रहा है। तो उसको जानकारी देने के लिए, उसको पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए आज ये प्रोग्राम हम लोग रखा गया है। यहाँ स्टेट अरुणाचल जो सिविल सेक्रेटरीट इंट्रेंस में हम लोग आज प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अभी जितना भी बुलेट जो रैली किया है, इन लोग का द्वारा उसको मैसेज दे देगा, क्योंकि ऐसा एक प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम से हमारा 40% पॉपुलेशन इंडियन का इसमें बेनिफिट मिल रहा है। अराउंड 50 लाख करोड़ पॉपुलेशन वो बेनिफिट मिल रहा है। तो अभी इस प्रोग्राम में जो कहीं का स्टेट भी कहीं में भी मतलब हम स्वास्थ्य मतलब हेल्थ फैसिलिटी मिल सकता है कहीं में जाके। मैं अरुणाचल प्रदेश का जो पेशेंट होने से दिल्ली में जाके कहीं में स्टेट में भी हम उसको ट्रीटमेंट कर सकता है जहाँ इम्पेनल हॉस्पिटल है। तो इसलिए आज का ये प्रोग्राम को आपका द्वारा आप जैसे भी मतलब मैं आपसे भी अनुरोध करता है, मतलब सारा हमारे स्टेट को मतलब अवेयरनेस देने में आप लगा रहिए और आप काम करते रहता है। ये है आज का प्रोग्राम सर। और ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए हम स्टेट हेल्थ एजेंसी कहते हैं, मैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बस विद दैट इंट्रोडक्शन नाउ यू कैन स्टार्ट। रेडी? Sir, can you please tell us about today's program? Yeah, today we flagged off a bike rally, which was to create awareness about the start of a fortnight event, which is called Ayushman Bharat Pakhwara. So Ayushman Bharat Pakhwara is basically we wanted to create awareness about Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is a health assurance scheme. Is a flagship program by the government of India and under the leadership of Pradhan Mantri Jan like Narendra Modi. So this is one of the largest health assurance scheme in the world, and the idea is to provide cashless benefits to the beneficiaries identified in the impaneled hospitals, so that these people, the beneficiaries that we have identified, they don't go into catastrophic financial burden. So, sir, when will be this scheme available for the normal citizens, as in general, or is there any as such the person need to be below BPL, or as in is there any category to avail this scheme? Yes, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is an entitlement based scheme wherein the beneficiaries are already identified based on socio-economic and caste census of 2011. So of course under that in Arunachal Pradesh we have 88,928 families identified, which covers around 4,26,000 individuals. So that is based on some economic deprivation criteria. So there are certain deprivation criteria, so under which they have they find it classify
the citizens based on their economical status. With that, the people are already identified, and it's not exactly BPL as such, but kind of more on a deprivation criteria. If they are, of course, scheduled tribes, if they are scheduled tribes, they are also classified as. But Arunachal itself, majority of the population is ST. So how will you categorize? No, we have again exclusion criteria are there. Exclusion criteria are like okay, if you are government employed, or if you have a household, or if you have a big farm, or if you have four-wheelers or something like that. There are exclusion criteria are there. We identify. The government of India has identified deprivation criteria. Under that deprivation criteria, again they have used exclusion criteria. So after using those exclusion criteria, 88,928 families are identified for benefits. So If they are not covered under that scheme, but for Arunachal, most of the Arunachals, they are covered under Chief Minister Arogya Arunachal Yojana. So kind of almost all the citizens of Arunachal Pradesh, they are covered under either of the scheme. So when will this scheme will be available? Is it No, this scheme has been launched in 2018. Of course, Chief Minister Arogya Arunachal we launched in August 2018. Then Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was launched on 23rd September 2018. So this is the third year of PMJY implementation, and that's why we are trying to create awareness. And 23rd September will be celebrated as Ayushman Bharat Divas. Okay. So today's event is a mark. Okay. Yeah. Inaugural kind. Yeah. So I wanted to ask one question. Isn't what is the response from the citizens so far in regards to this scheme? Since it is the 3 years going on, so what is the update on the citizen? Like, what is their opinion or their experience so far in this regard? Yeah, see, as on that, we have like more than say 10 1 lakh 24 1 lakh more than 1 lakh families have been identified under CMAY, and more than 25,000 people have been identified or verified under PMJY.